नमस्कार बच्चों, वेलकम टू क्लासेस बाय मेहता सर। आज का टॉपिक है नॉन डिपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट एनडीएमआर। ये दो तरह के होते हैं। स्टेरॉयडल कंपाउंड जो वेगोलिटिक होता है, इसका एग्जांपल है वेक्यूरोनियम। दूसरा है बेंजिल आइसोफिनोलिन्स जो हिस्टामिन रिलीज करता है, इसका एग्जांपल है एट्राक्यूरियम। अब हम यूनिक फार्माकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। सुटेबिलिटी फॉर इंट्यूबेशन। एनडीएमआर इंट्यूबेशन के लिए बहुत सुटेबल नहीं माने जाते। सर्टेन कंडीशंस इंट्यूबेशन को फैसिलिटेट कर सकते हैं, जैसे टोटल इंट्यूबेशन डोज की 10 to 15% डोज अगर इंट्यूबेशन के 5 मिनट पहले दे दी जाए और रिमेनिंग डोज इंट्यूबेशन के ठीक पहले देने पर 60 to 90 सेकेंड्स में पेशेंट इंट्यूबेशन के लिए रेडी हो जाता है। सुटेबिलिटी फॉर प्रिवेंटिंग फेसिकुलेशंस, इसको पिछले चैप्टर में हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। रिलैक्सेशन मेंटेनेंस के लिए ये एक बहुत अच्छी ड्रग मानी जाती है। सारे इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स इसके इफेक्ट को पोटेंशिएट करते हैं। Potentiate the effect. Potentiation by other NDMRs, mevacurium and pancuronium shows supraadditive effect when given together. Autonomic side effect: pancuronium shows antimuscarinic activity, hence causes tachycardia. Histamine release: atracurium causes histamine release. Hepatic clearance: vecuronium and pancuronium depends on hepatic clearance to some extent. Hepatic clearance to some extent. Renal clearance: vecuron depends on kidney function to some extent. General pharmacological characteristics: temperature, hypothermia, increase blockade, acid-base balance, respiratory acidosis, prolongs the effect of NDMRs. Electrolyte abnormalities: decreased potassium, increased calcium, sorry, decreased calcium, increased magnesium,
potentiates the effect of NDMRs. Age. Neonates show increased sensitivity to NDMRs. पर neonates में वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होता है, तो इसलिए इंक्रीज सेंसिटिविटी होने के बावजूद ड्रग की डोज में हमें कमी नहीं करनी पड़ती. नाउ ड्रग इंटरेक्शन. सर्टेन ड्रग्स इंटरेक्ट विद NDMR की लिस्ट यहाँ पर दी हुई है, आप डिटेल में देख सकते हो. एक बहुत स्पेसिफिक ड्रग इंटरेक्शन में यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करना चाहता हूँ. ये ड्रग इंटरेक्शन आफ्टर NDMR reversal with neostigmine. अगर हमें स्कोलिन देने की जरूरत पड़े, दोबारा एक पेशेंट को इंटूबेट करने की आवश्यकता हो, तो हम स्कोलिन कितनी देर बाद दे सकते हैं और कितनी डोज में दे सकते हैं, इसको यहाँ पर एक बार डिस्कस करते हैं. Immediately after a laryngeal spasm, 0.1 mg per kg scoline. After 30 minutes, 0.25 mg per kg scoline. After 90 to 120 minutes, 1.5 to 2 per kg scoline. Now concurrent disease. कई सारी concurrent disease में NDMR के इफेक्ट्स पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकते हैं. दो इम्पोर्टेंट डिजीज के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, सिरोटिक लीवर डिजीज और क्रोनिक रीनल फेल्योर. दोनों ही कंडीशन में वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीज हो जाता है. So it causes increase loading dose and decrease in maintenance dose due to less clearance by liver and kidney. मसल ग्रुप से बात कर रहे हैं. डायफ्राम, जा, लैरिंक्स एंड फेशियल मसल, इनका अर्ली ब्लॉकेड होता है और अर्ली रिवर्सल होता है. अगर इसको हम थंब मसल से कंपेरिजन करें. अब एट्राक्यूरियम का फिजिकल स्ट्रक्चर
बेंजिल आइसोक्विनोलिन स्ट्रक्चर होता है। ये मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन की बात कर लेते हैं। मेटाबॉलिज्म एस्टर हाइड्रोलिसिस और हाफमैन एलिमिनेशन के द्वारा मेटाबॉलिज्म होती है। ये लीवर और किडनी पे डिपेंडेंट है। डोज, इंट्यूबेशन डोज 0.5 mg per kg, लोडिंग डोज 0.25 mg per kg, मेंटेनेंस डोज 0.1 mg per kg every 10 to 20 minutes. साइड इफेक्ट्स एंड क्लिनिकल कंसिडरेशंस देख लेते हैं। हाइपरटेंशन एंड टैकीकार्डिया, dose above 0.5 mg per kg can cause hypotension. Bronchospasm in patients with history of bronchial asthma or sometimes in normal patients. Laudanosine toxicity, laudanosine एक हाफमैन डिग्रेडेशन का मेटाबोलाइट है एट्राक्यूरियम का, और ये लीवर के द्वारा क्लियर किया जाता है। और अगर पेशेंट ने हाई टोटल डोज ली हो या लीवर फेल्योर की कंडीशन हो तो लाडेनोसिन लीवर के द्वारा क्लियर नहीं किया जा पाता, और ये सीएनएस एक्साइटेशन करता है और इट कैन कॉज सीजर्स। टेम्परेचर एंड पीएच सेंसिटिविटी, hypothermia and acidosis potentiate the effect. Chemical incompatibility, एट्राक्यूरियम एक एसिडिक ड्रग है, अगर इसको किसी अल्कलाइन ड्रग के साथ सेम आईवी लाइन में दे दिया जाए जैसे कि सोडियम थायोपेंटोन तो दोनों एक दूसरे को प्रेसिपिटेट कर दें। एलर्जिक रिएक्शन बाय इंड्यूसिंग आईजीई मीडिएटेड एंटीबॉडी। अब हम बात करते हैं वेक्यूरेनिम के बारे में। वेक्यूरेनिम का फिजिकल स्ट्रक्चर स्टेरॉयडल कंपाउंड होता है। मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, metabolized by liver to some extent. Dependent on biliary excretion. Primarily 75% and renal excretion secondary 25%. In ICU, prolonged muscle blockade can be caused by long-term infusion cause accumulation of 3-hydroxy metabolite
changing drug clearance, development of polyneuropathy. Risk factors include female gender, renal failure, high dose corticosteroid therapy, and sepsis. Now dose. Intubation doses 0.082 to 0.12 milligram per kg. Loading dose 0.04 milligram per kg. Maintenance dose 0.01 milligram per kg every 15 to 20. So side effects and clinical considerations. Cardiovascular, usually cardiostable. Liver failure, prolongation of action after terminal liver. It's all about neuromuscular blocking agents. Thank you for watching. अगली सीरीज ईसीजी पर होगी जो अपकमिंग वीक में रिलीज होगी. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन मिलती